scheduling is important, because otherwise what happens is people generally focus only on one aspect of the exam. They would either study pre or either just go for mains and not be prepared for the other thing. किसी भी एक सब्जेक्ट कि एकदम डेप्थ में नहीं जाए. यूपीएससी थोड़ा जनरलिस्टिक एग्जाम है टू एन एक्सटेंट. आपको सब चीज़ों के बारे में अच्छा अच्छा आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए. सेगमेंटेड अप्रोच विल नॉट गिव यू the fruit that you desire. So ideally what you should do is have an integrated approach. So for that, this is what we'll be doing on 20th. I and Mukund will be coming and we'll be giving you a 5-phase detailed strategy for 2026 aspirants. So Mukund, if I can call you a veteran, because since you've been attempting this exam over a period of time, you have your own story about that, definitely. And you have seen both sides. You've given the exam when you did not get a rank, so you know the patience of getting the rank, and you have also attempted the exam after getting a rank or rank improvement. You are the perfect person who I would say knows it all with respect to UPSC examination. So as a veteran, if you had to start it all over again, what are the strict do's and don'ts that you would advise to students? So when it comes to do's, I think one of the things would be कि जैसे अगर आप कोचिंग कर रहे हो, देखो दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं. एक सेल्फ स्टडी हो सकता है, कोचिंग वाले हो सकते हैं. तो फॉर कोचिंग वाला पीपल आई वुड से कि इफ यू आर गोइंग टू क्लासेस, make sure that you study beforehand what is going to be taught in the class, and then go after that and revise it for an hour at least. That significantly improves the retention that you'll have of the content and the understanding of the content. And this is something that I did very scarcely when I was doing my foundation course. And उसकी वजह से फिर मेरा notes भी उतना usable नहीं रहा था. So that is something that everyone should do. Second is, before jumping into the whole sea of UPSC and its books, try and make sure that you understand the exam, and you can do that by going through the PYQs, going through the syllabus, and understanding, going through topper videos in general. What that does is it prepares you to an extent before actually starting the preparation. Otherwise क्या होता है कि आप सीधा बुक्स पढ़ने लग जाते हैं एंड यू आर ओपन टू बैड एडवाइस, क्योंकि आप उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे. सो फॉर एग्जांपल मेरे साथ, ये मैंने पहले भी आई थिंक मेंशन किया होगा अभी, कि मैंने कोचिंग शुरू कर दिया. फिर मुझे किसी ने बोला कि इंटरनेशनल रिलेशंस, एक तो इंटरेस्टिंग भी होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना शुरू किया, उसको बड़ा अच्छा लगता था. फिर वहाँ के टीचर ने बोल दिया कि वो अगर इंटरनेशनल रिलेशन समझना है तो उसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. तो वो पढ़ना शुरू कर दिया. शुरू का 2 महीना वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स बनाया, और फिर रियलाइज हुआ कि ये प्री में नहीं आता है, ये तो मेंस में आता है, और मेरा ऑप्शनल है, बट वो ऑप्शनल में भी काम नहीं आएंगे वो नोट्स. तो वो नोट्स फिर यूज ही नहीं हुए, 2 महीने वेस्ट हो गए. तो वही थोड़ा सा प्रिपेयर खुद को कर लें प्रिपरेशन से पहले. डूज में आई थिंक यही है, पीवाईक्यूज अच्छे से करें, सिलेबस अच्छे से पढ़ें, सिलेबस को चिपका लें, याद कर लें. एक बार सिलेबस आपको याद हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चीज़ें फिल्टर करने लगता है. आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये न्यूज़ काम की है, ये नहीं है. आप बुक्स पढ़ोगे तो आप फिल्टर आउट करोगे कि ये बुक काम की है, ये बुक सिर्फ नॉलेज के लिए है, एक्चुअली यूपीएससी में एग्जाम में नहीं मदद करेगी. डोंट्स में यही है कि किसी भी एक सब्जेक्ट कि एकदम डेप्थ में नहीं जाए. यूपीएससी थोड़ा जनरलिस्टिक एग्जाम है टू एन एक्सटेंट. आपको सब चीज़ों के बारे में अच्छा अच्छा आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए. तो ज्ञान अर्जन करने का टाइम ये नहीं है, वो अलग से आप कर सकते हैं. बट इस टाइम पे अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो बेटर रहेगा. और एक्सटेंडिंग दैट पॉइंट, एक सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं होनी चाहिए. इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप उसे मल्टीपल बार रिवाइज करो, 3 से 4 बार. तो वो ज़रूरी है. फिर सिर्फ बुक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा टेस्टिंग भी करना पड़ेगा खुद को. तो नंबर ऑफ टेस्ट एक डिसेंट होना चाहिए, जिसमें आप टेस्ट सीरीज भी कर रहे हो, थोड़ा पीवाईक्यूज भी कर रहे हो. ये एक इम्पॉर्टेंट डोंट है. सिर्फ क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो और उन्हें एनालाइज नहीं कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है. तो ये एक सिग्निफिकेंट डोंट आई थिंक मेरे साथ था. मैंने शुरू के 2 अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज को हमेशा ऐसे लिया कि मुझे इसमें अच्छा स्कोर करना है, टेस्ट सीरीज में 100 से नंबर ऊपर लाने हैं प्री में. और वो अप्रोच गलत था, क्योंकि फिर मैं बस नंबर देखता था, अगर 100 से ऊपर है तो खुश हो जाता था, कम है तो दुखी हो जाता था. कभी उसका एनालिसिस नहीं करता था कि क्वेश्चन गलत कौन से सेक्शन से हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, इसमें से मुझे किस में रिवीजन की जरूरत है. तो आई थिंक ये डोंट्स हैं मोर और लेस. Right. So this session is that a webinar that we'll be doing will be for 2026 aspirants, and we have divided their preparation into 5 phases.
So from November to February, from March to June, from July to September, October to Jan 2026, and then February to April 2026, and we assume that May 2026 will be the exam date. So your thought on this, should aspirants who are attempting in 2026, should they streamline their preparation to such micro scheduling? They should do scheduling at least. I think अब वो micro का ये है कि it can be customized based on your own needs, but scheduling is important because otherwise what happens is people generally focus only on one aspect of the exam. They would either study pre or either just go for mains and not be prepared for the other thing. So that happened in my case as well. For the first two prelims, I just focused on prelims and just clearing prelims. And when I actually cleared prelims in my third attempt, I was not ready at all for mains, so I did not clear it. So a segmented approach will not give you the fruit that you desire. So ideally, what you should do is have an integrated approach. So for that, scheduling I think is important, where you divide time and decide that all right, for these 3 months I'll focus on this, and then so and so. So I think scheduling is important. Right. So once we are done with scheduling part, then we allocate subjects like from PS1, like from essay to ethics, and maybe including optional also. So the allocation happens. This is the right way about right way to go about it. So of course we'll be discussing this in detail when it comes to main webinar. But if I have to ask you today, what areas or what subjects you would say that aspirants should prepare before attempting prelims 2025 so that they can to some extent become mains ready? First and foremost, I think optional has to be there, whatever your optional is. If you've prepared your notes and you've done some answer writing, then you are in the sweet spot where you have a good chance of actually clearing the mains. The reason is it's not just about the weightage of that particular thing. It is about कि एक्चुअली आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो. जैसे जीएस 1 2 3 4 भी 250 मार्क्स के पेपर हैं, बट उनमें उतना मार्क्स कभी नहीं आएगा जितना ऑप्शनल में आ सकता है एक पेपर में. तो सेम गोज फॉर आई थिंक एथिक्स एंड ऐसे एज वेल. ये 3 ऐसे एरियाज हैं जो कि अगर आपने उन पे कमांड कर लिया तो फिर आप एज रहता है आपके पास मेंस में. एंड ऑप्शनल तो ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, इट इज टाइम टेकिंग. ऐसे और एथिक्स का एडवांटेज ये है कि वो उतना टाइम टेकिंग भी नहीं है, सिलेबस उतना वास्ट नहीं है. एंड ऐसे तो ऐसे का कोई सिलेबस है ही नहीं. यू हैव टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग. तो आई थिंक दीज 3 आर द low hanging fruits which are I think the most important in terms of clearing mains. Correct. So now that we have also allocated the subject, we have divided the preparation into 5 phases. There has to be a toolkit about each and every subject. By toolkit, I would mean like resource book or resources to follow for any say any theme or any subject. Maybe the value addition that we do beforehand, important committee judgments and such things. Or maybe in essay we prepare ready-made introduction and conclusion beforehand. So every subject has a toolkit. So how to incorporate? So one, you're like, what I want to know from you right now is this toolkit important? Is the preparation of this toolkit important from aspirants' viewpoint before even prelims? So when they're scheduling, should they take care the needs of toolkit also? I think in an ideal world, yes, I think toolkits are important, or value addition, I like to call it. You should have value addition for each section. But at the same time, for me, it was never possible to do it before prelims. So what I used to do is I used to focus firstly on completing the syllabus and then adding value to it. But yes, I do agree that value addition is important to, again, gain an edge. So for example, for essay, you would ideally need a set of anecdotes, a set of good examples. For GS1, you would need, for GS1, I guess for society, you can have some terms and so on. I think for GS3, a lot of data is required. For GS2, judgments are required. For GS4, again, examples are important. And for optional, if you have, again, what happens, for example, in my case, what happened was that I had a good understanding of my optional, which was history, because I was a history graduate. But I did not know the name of scholars. I did not was not able to name the theories. I knew what the theory was, but I could not give the exact name to it. And that is why I didn't score that much, especially in my initial attempts. So I think these value additions are very key. So that I think there is that 80-20 rule, कि 80% आप hard work करते हो,
उसके बाद का जो 20% होता है उससे बहुत सिग्निफिकेंट आपको ग्रोथ मिलता है। तो वो 20% आई थिंक वो वैल्यू एडिशन है कि उससे मल्टीफोल्ड आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। Right. So by toolkit, we necessarily do not mean judgments also every time. Maybe a subject-wise strategy that as हम्म। the aspirant should know when approaching the cycle beforehand. So great. This is what we'll be doing on 20th, Wednesday at 7 p.m. I and Mukund will be coming and we'll be giving you a 5-phase detailed strategy for 2026 aspirants. Of course, we will tell you which subject to allocate in which time frame and a subject-wise strategy or a toolkit, whatever you would want to call it. So thank you so much, Mukund. I hope to see you on 20th. थैंक यू सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।